Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute and then we'll start, okay? Good afternoon, sir. Good afternoon. प्रियांशी प्रशांत अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. ठीक है, we will get started. Others could join in the meantime. It's okay. ठीक है, तो लेट्स डू अ फुल रिवीजन ऑफ द लाइट चैप्टर. ठीक है, हमने आपके प्री बोर्ड से पहले वी डिड अ क्विक रिवीजन विद सम बोर्ड क्वेश्चंस. ओके, अभी जो है लेट्स गो थ्रू द एंटायर चैप्टर सो दैट आपका जो डिटेल्स हैं चैप्टर के वो भी एक बार रिवाइज हो जाए. ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड के क्वेश्चंस करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक तरह की ही चीजें रिवाइज हो पाती हैं. सो लेट्स डू अ कंप्लीट रिवीजन. ओके, so let's make the session interactive. आप जो है answer the questions. These are simple questions, all of these, and slowly they will help recap everything that you have learned. Okay, so light travels in a straight line is demonstrated by which property of light demonstrates that it travels in a straight line? कौन सा phenomena है इसमें? An image is found by concave mirror. Does it show that it travels in a straight line? The Tyndall effect. Sharp shadow is formed. Formation of rainbow. कौन सा है इनमें से? Yes. बताइए बेटा. Sharp shadow is formed. Sir, shadow is formed. Yes. A sharp shadow is formed is a proof traveling in a straight line. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शार्प शेडो फॉर्म होती है. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर यहाँ एक ऑब्स्टेकल था और यहाँ से लाइट आ रही थी तो वो ऐसे करके इस तरह से लाइट इतने एरिया में ब्लॉक हो गई और यहाँ पे हमारी उसकी शेडो बन गई. ठीक है ना. अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो द शेडो मे नॉट हैव बीन दैट शार्प. ऐसे बेंड हो गई होती लाइट, राइट? तो we come to know that it travels in a straight line. ठीक है ना. What is wrong with the following depiction of
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने ये दिखा दिया है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, राइट? ये तो है इसमें, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इस रिफ्लेक्शन में? They are not lying on the same plane. Yes, they are not. So this is the plane on which the incident and the normal are. Okay, but as I have shown with the dotted line कि reflected ray उसके नीचे से जा रही है. Okay, so they are not in the same plane, and that is the problem with this depiction. Okay, very good. An image formed by the plane mirror cannot be taken on a screen because, okay, we know this is true. We need to give the right reason for it. Image is formed behind the mirror. Light rays do not really meet after reflection, but they appear to meet. The image formed is upright. None of the above. Option B. Option B. Okay, so this is the correct answer. Even option A might look like a correct answer to a lot of people, right? But it doesn't matter where the image is being formed, right? The important thing is a image can be taken on a screen only when the rays of light after reflection or refraction, whatever is the case, actually meet. अगर वो meet नहीं होती हैं, they only appear to come from a point, then the image is virtual and cannot be taken on a screen. Okay, so only B is the correct answer, others are not. The laws of reflection are only true when reflection is done by a smooth surface. When the surface is rough, the reflection follows a random phenomenon called diffusion. True or false? False. Okay, what is wrong with this statement? Sir, in the diffusion reflection of light, also the angle of reflection Very is regular. equal to the incidence. Yes. Means the laws of reflection are always obeyed. Very good. Okay, so laws of reflection are always obeyed. ठीक है? Usually when we use a smooth surface like a mirror or a surface of water or something which is very, very smooth, then a parallel beam gets reflected as a parallel beam. Okay, but when the surface is irregular, then a parallel beam comes out as not a parallel beam. Like this. Okay. Okay. So it does not come back as a parallel beam, and this is called diffusion. So that part is true. Such a thing is called diffusion. वो ठीक है. लेकिन the rules are of reflection at this point is being followed. They are always followed. So that part is not true in this statement. What is the difference between the pole and the center of curvature of a spherical mirror? Center of curvature. And pole. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर पोल तो वो होता है जो मिरर या जो लेंस के बीच का पार्ट होता है, जो मिडल होता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस होता है ना, उसका जो रेडियस होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है पूरे स्फेयर का. Center of curvature is the center of the spherical mirror of the spherical mirror of which the mirror is a part, and the pole is the center of the aperture.
वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, आप दोनों के आंसर्स ठीक हैं, बट जो आपने बाद में बोला वो परफेक्ट है, राइट। सो पहली चीज क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो एक स्फीयर है हमारे पास। ओके, हमारे पास एक स्फीयर है ऐसे, उसमें Good से afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Sir, a few students they have switched off their camera, so I request. यस यस, अनिष्का, सिमरन, आप भी अपना कैमरा ऑन करिए बेटा। अंशु, पंकज नागर ने कर लिया, वेरी गुड। अंशु आपका नहीं ऑन है। और यश, आपका कैमरा जो है ना, इट्स पॉइंटिंग टू योर नोटबुक। ठीक है ना, आपको अपने ऊपर रखना है कैमरे को, नोटबुक पे तभी रखिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज दिखानी है हमें नोटबुक में। आप अपने Okay, sir. कैमरे का ओरिएंटेशन बदल लीजिए। हाँ, वेरी गुड। ओके, अंचल आपका कैमरा ऑफ हो गया है इस दौरान, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, वेरी गुड। ओके ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, तो ये एक स्फीयर है, इसमें से हमने यहाँ पे ऐसे कट कर कर जो है एक मिरर निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे को एक मिरर मिल गया है। अगर अब इसको मैं रोटेट करके देखूं तो ये मिरर ऐसे दिखाई देता है मुझे, गोल। ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा, जो एरिया यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? दिशा यूज्ड अ वर्ड, this area used for reflection is called aperture. Okay, this is called the aperture. Okay, इस aperture का जो ज्यादातर सर्कुलर होता है, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि एक स्फीयर को ऐसे एक प्लेन से कट करेंगे तो एक स्फीयर मिलता है, एक सर्कल मिलता है हमें, तो ये सर्कुलर ही होता है यूजुअली। वो बात दूसरी है कि हम चाहें तो उसको किसी भी शेप में कट कर लें, बट नॉर्मली सर्कुलर होता है। इस सर्कल का जो सेंटर होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, और जो ये बड़ा स्फीयर था जिसमें से इसको कट करके निकाला है, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इसका रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, अब ये ध्यान रखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नेवर एक्चुअली ऑन द रियल मिरर, राइट, इट इज समवेयर अवे, राइट, इनटू द एयर। और जो पोल है वो हमेशा मिरर के ऊपर होता है, राइट, इट्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, तो ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। एंड व्हाट इज इट दैट वी गेट व्हेन आई जॉइन द पोल? ओके, हियर इज द पोल. I join the pole and the center of the curvature with a line. Principal axis. This line will be called the principal axis of the mirror. Very good. How would you differentiate between a concave and a convex mirror by physically examining it? ठीक है, आपको रिफ्लेक्शन नहीं करना है, आपको केवल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है उसका। तो कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्केव है कौन सा कॉन्वेक्स है? Concave mirror bulges out inwards and a convex mirror bulges outwards. हाँ, तो जो कॉन्केव मिरर है हैज अ
depression in the center of the reflecting side. ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में what will we say? It has a bulge in the center of the reflecting part, reflecting side. Okay. How you would like to concentrate the sun's rays onto a piece of paper to make it catch fire. Which of the following is true? You will use a concave mirror, you will use a convex mirror, you will use a plane mirror, none of the above. Option A. Option A. You will use a concave mirror. Okay, so this is true. अगर मैं मिरर्स की जगह यहाँ पे लेंस लिख दूं, convex lens. Convex lens. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग दैट द यूजुअली जो कॉन्केव मिरर काम करता है लगभग वैसा ही काम कॉन्वेक्स लेंस भी करता है, यानी दोनों ही कन्वर्जिंग डिवाइसेस हैं जो पैरेलल बीम को कन्वर्ज करती है। डिफाइन द फोकस फॉर अ कॉन्केव मिरर एंड फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। The point at which the parallel lines of principal axis meet after reflection is the definition for focus for the concave mirror. And the imaginary point where the parallel lines of principal axis appear to meet is the definition of focus for convex mirror. तो बस उसको appear to meet की जगह क्या बोलेंगे? Appear to diverge from. Yes. Okay. तो कॉन्केव मिरर में क्या डेफिनेशन होगी? कॉन्केव मिरर में डेफिनेशन ये होगी कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इट कन्वर्जेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये ऐसे आके ऐसे कन्वर्ज हो गई, तो ये इसका फोकस कहलाता है। बट इन केस ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर द वर्डिंग्स ऑफ द definition slightly change. It's still the same kind of a beam, but it gets diverged out. So from where it appears to diverge from, the imaginary point, from where it appears to diverge from is called the focus. ठीक है, तो ये दोनों definitions लिखनी और उनको रे डायग्राम में ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस दैट पार्ट। What is the focal length of a spherical mirror numerically equal to? न्यूमेरिकली किस चीज के इक्वल होता है फोकल लेंथ? Okay, I can also use the word here. Approximately. Focal length approximately किसके इक्वल होती है? Half of center of curvature. It is half of center of curvature. So F is equal to half of radius of curvature. Actually center of curvature ना बोलिए क्योंकि center of curvature is a point. The length is called the radius. Okay. So it is half of radius of curvature. Okay. Roughly ये इसके इक्वल होती है और हम यही लेके चलेंगे हमेशा. Okay. We will never deviate from this. We will also always assume this to be true. Although this is only true for very small apertures.
Okay, but we will still take this as eternal truth. The focal length of a concave mirror is taken as negative, true, false, True. right? So why is that? Because देखते हैं. Hmm? focal length lies on the left. Very good, Okay. right? हाँ. So हम न्यू कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पैरेलल रे आई तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे फोकस में से गई, यहाँ एफ फोकस है, तो हम डिस्टेंस हमेशा मेजर करेंगे पोल से, और जब हम पोल से डिस्टेंस मेजर शुरू करेंगे तो किस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है हमें? लेफ्ट में आना पड़ रहा है डिस्टेंस मेजर, राइट? डिस्टेंसेस आर ऑलवेज यू स्टार्ट मेजरिंग देम फ्रॉम पोल, और अब हमें लेफ्ट में आना पड़ रहा है, इसलिए focal length of a concave mirror is treated as a negative focal length. Following are given a list of common rays that we take to depict a ray diagram of a concave spherical mirror. Justify these rays based on laws of reflection. ठीक है, तो ये रेज जो हमारी कॉमन 3 रेज जो हम यूज करते हैं, जो सबसे कॉमन 3 रेज होती हैं, इनको हमें जस्टिफाई करना है बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज I is equal to R. They are always in a plane, so that we don't have to worry about. We have Anchal, keep yourself on mute if you're talking to somebody else. Okay, so let's do this. Okay. Now, right? So we have to prove that the ray, we will take this example. Right? Now, how can we justify this? Why does it go through the focus? Can you prove that? So when we keep an object in infinity, Mhm. then the image is formed at focus. Yes. Which And is, from infinity, the rays are parallel. huh. So in this way, we can prove. No, but we have to prove it using the laws of reflection, right? Does this follow the laws of reflection? It is going through this point, which is half of this. इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये इसका हाफ है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर है, राइट? सो वी विल हैव टू ज्योमेट्रिकली प्रूव इट. There is a small approximation needed in this, but let's do that. Okay, so we join the C to the point of reflection, right? Now this angle is the angle of incidence, this angle is the angle of reflection, right? Now what is this angle? Angle of incidence के equal. Why? Because they are alternate angles. These Yes. two are parallel lines. This is a transversal, and this is also I, because it is an alternate angle, right? Now, using the law of reflection, I is equal to R. Okay, or we can go the other way around. Now, when the aperture is very small, okay, assuming a small aperture, it means that this, okay, let this point be an A. AF becomes almost equal to
PF. Right? Why? Because ये दोनों बहुत पास आ गई हैं. This distance is very less. So this is equal to this. This is the approximation we have to use. Okay. So now this length, we already know that CF is equal to AF. What is the reason? Focal length is half of No, radius. sides opposite equal angles. Right? These two angles are Equal. right if the laws of reflection are met, right? So these are equal, and AP and PF are also roughly equal. Okay, so we conclude that the laws of reflection are met. Okay, so it will converge at a distance which is half of the radius of curvature. तो ये जो है, we can prove this using the laws of reflection. A ray coming through the focus reflects parallel to the principal axis. The proof is exactly the same, बस arrow की direction अलग है, right? Arrow की direction ये है, proof exactly same है. Understood? Now, a ray coming through the center of curvature retraces its own path. How can we prove that? Because the angle of incidence is 0, so the angle of reflection is also 0. Very good. Now, this is the center of this circle, right? So radius है ये तो, right? तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये 90 डिग्री होगा. Radius is at 90 degree to the tangent. So basically this line is on the normal, means angle I is equal to 0. So angle R also has to be equal to 0, means it has to retrace its path. Okay. So all these standard 3 lines we can prove obey the law of reflection. Now let's quickly fill up this table for image formation of a concave mirror. Okay. This is something that I suppose most of you can remember, right? So object placement is at infinity. So image का location कहाँ होगा? Focus. Focus पे होगा. Type क्या होगा image का? Real and inverted. Real. Real and inverted always go hand in hand, right? So we can always say without thinking, real बोला तो inverted होगा ही. ठीक है? फिर magnification. Highly diminished. Highly diminished. Very good. Okay. So it is very, very small, almost a point image. Okay. And is it erect inverted? It is obviously inverted. Okay. Because it is real, it has to be inverted. Now, beyond C. When we say beyond C, we mean it is not at infinity. Okay. Between focus and center of curvature. Between focus and center of curvature. The type is Real and inverted. real and inverted. Magnification. Diminished. But we will drop the word highly in this case. And that is a straightforward inverted. It is at the center of curvature. Image will be at Center of curvature. center of curvature. The type will be Real and inverted. magnification. Same size as of object. Same size as the object, and obviously inverted, that I don't have to ask. Between F and C. Beyond C.
It is beyond C. The type is still Same. real and inverted, and the magnification Enlarged. enlarged. And obviously real है inverted होगा. Okay, and is at focus. So image कहाँ बनेगी? When the object is at focus, will be formed at infinity. ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक लिमिटिंग केस आ जाता है. ओके, जब इंफिनिटी पे इमेज बन रही है ना, तो वी एक्चुअली कैन नॉट से फॉर श्योर कि वो रियल है या वर्चुअल है. ओके, क्योंकि ये लिमिटिंग केस होता है. ओके, इसमें वी कैन, दे आर पैरेलल रेस, राइट. अब पैरेलल रेस प्लस इंफिनिटी पे मीट हो रहे हैं अगर, तो वर्चुअल है इमेज. अगर माइनस इंफिनिटी पे मीट हो रहे हैं तो रियल है इमेज. अब पैरेलल लाइंस हैं भाई, दोनों तरफ कहीं पे भी बोल सकते हैं मीट हो रहे हैं. गॉट इट. तो ये एक लिमिटिंग केस हो जाता है जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं. यू अंडरस्टूड? Then sir, what we have to write in examination? हाँ, राइट. सो ये लिमिटिंग केस है, लेकिन कन्वेंशनली हम हमेशा कौन सा वाला लेते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड हाईली मैग्निफाइड को लेते हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? स्टिल वी विल से इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. वी विल से हाईली एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इज ऑब्वियस, वो हमने यही बोल दिया रियल. ओके, तो ये वाला केस हम लेंगे. ऑल्दो ये लिमिटिंग केस है, दोनों में ही सच होता है ये. ओके, अब now let's come to the straightforward case again, between the pole and the focus. Where is the image formed? Behind the mirror. Behind the mirror. It is virtual. It is virtual now, and it is Erect. erect है. Enlarged. Erect, and it is enlarged. Okay, very good. Now let's fill the same table for convex mirror. The object is placed at infinity. Where will the image be formed? At focus. Image will be formed at the focus. What type of image will it be? Virtual and erect. It is virtual and erect. And the magnification is? Highly diminished. Highly diminished. Yeah, it is highly diminished. Okay, highly diminished. Now, beyond C, okay, so this is a trick. Okay, beyond C, we can't place our object. Why? Because this is our mirror, right? C and F तो यहाँ पे हैं. Object हम पीछे तो रख नहीं सकते. No image will be formed, right? So all these cases are not applicable. Okay, so we are left with only one case, which is in front, but not at infinity. उसमें क्या होगा? Image location will be between P and F.
ठीक है ना, बिटवीन P एंड F होगा, यहाँ कहीं इमेज बनेगा इसके बीच में, राइट, एंड it will be diminished. Virtual and erect. It will be diminished, virtual and erect. Okay, और इसको आप केवल behind the mirror बोल सकते हैं. That is okay. I don't think they have ever asked where it is actually there, because behind the mirror we can't make the distance measurements actually, right? So वो कभी पूछा नहीं जाता है, तो behind the mirror is good enough to say. Okay. तो इसमें ये सब केसेस होते ही नहीं. Name the type of mirror you would prefer to use for the following uses. ठीक है, तो कौन सा हम यूज करेंगे? एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं किसी में. शेविंग मिरर, Concave mirror. concave. Okay, why? It shows an enlarged image of her face. Yes. Okay, so it gives a virtual, erect and enlarged image of the face. Okay, so what हमें शेव करते हुए obviously inverted image would not be very helpful. Okay, so it's a virtual enlarged image which is erect and enlarged. Okay, so it's a good image for this. Rear view in a vehicle. Convex mirror. Why? It shows a larger view. Yes, the field Also, of it shows view the is, erect images of the vehicles. it shows virtual erect images and it gives us a Larger wider, view. हाँ, larger view. It gives us a wider field of view. ठीक है, हमें एक बड़ा फील्ड दिखाई देता है जो हम चाहते हैं. We don't want to only see one car. We want to see everything that is behind us. Reflector in a torch. Concave mirror. Concave mirror. Why? Because it converges the light rays. Very good. Because of it converges. Okay. So converge किस तरह, किसको किस में करता है? Let's complete the answer. Converges the divergent rays from the bulb to a parallel beam. ठीक है, तो कन्वर्ज एक डाइवर्जेंट बीम को पैरेलल बीम में कन्वर्ज करता है. Excuse me, sir. हाँ, Sir, can you please explain the third one with example? ओके. I mean, ये जो आपने example दिया है टॉर्च वाला, इसको आप थोड़ा डायग्राम से explain कर हाँ, दीजिए because ये yeah, समझ sure. नहीं आया. Okay, okay, sure. So this is our concave mirror. What do we do near the focus of this? We put our bulb. Okay, so the bulb will give the light like this also. जो फॉरवर्ड लाइट है वो तो उसकी जा ही रही है, उसको हम कोई मॉड्यूलेट नहीं कर रहे, राइट? वो तो जा ही रही है आगे, दैट्स नॉट एन इश्यू. जो पीछे लाइट आई, बिकॉज दिस इज नियर द फोकस, दिस विल कम आउट ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल बीम. So we will be able to throw the light onto something in front of us. That's the objective of a torch. ठीक है? Understood this? Yes, sir. Okay. Now, I have not written that as a case here, but drawing this gives us another use case. Let me write that here, right?
ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टर इन द टॉर्च हैज टू बी कॉन्केव, बट स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो कौन से मिरर्स होते हैं? That is convex. वो कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें लाइट फोकस नहीं करना चाहते, हम वी वांट टू इल्यूमिनेट अ लार्जर पार्ट ऑफ द रोड, राइट। तो वो कैसे होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि एक पीछे मिरर है, ओके, और यहाँ पे हमारा बल्ब है, राइट। तो जो लाइट ऐसे जाएगी इट विल गेट डाइवर्ज्ड आउट, so it will illuminate a larger part of the street. ओके, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी जो भी डिफ्यूज टाइप की लाइट है वो पूरी स्ट्रीट पर आ जाए। ओके, तो रिफ्लेक्टर्स दोनों तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज, टॉर्च में कॉन्केव और स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स। ओके, so I think we have come to the end of the class. Okay, I think the Zoom is not cutting us out. Do you want me to continue with this slide at least? Should we complete this slide? It might take another 5-6 minutes. Yes, sir. Okay. So luckily Zoom is not cutting us out today, it seems. Okay. Now, celestial telescope. What type of mirror will be used in this? Convex. हाँ देखिए, कॉन्वेक्स से इमेज और छोटी बनती है। हम टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? एनलार्जमेंट चाहते हैं, राइट। सो एनलार्जमेंट हमें कौन सा देगा? कॉनकेव मिरर, Concave. ठीक है। और जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, मान लीजिए हम किसी स्टार को देख रहे हैं, हम जुपिटर को देख रहे हैं, देन वो इमेज इन्वर्टेड आती है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट डजंट मैटर कि मून की इमेज सीधी है या उल्टी है। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं, राइट, व्हेन वी आर सीइंग समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, then obviously we don't want to use telescopes which give inverted image. Okay, so यहाँ पे real and inverted image is good enough for us, and we use the mirror based telescopes as celestial telescopes. Okay, they are more powerful than the lens based telescopes. सोलर कुकर में हम कौन सा लेंस कौन सा मिरर यूज करते हैं? Concave mirror. Solar cooker में actually the right answer is not concave. It appears so, but the right answer is actually the plane mirror. Why is that? क्योंकि देखिए, जब हम सोलर कुकर यूज करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे उस पे एक मिरर होता है, ओके। इस मिरर से सनरेज रिफ्लेक्ट होके अंदर जाती है। वी डोंट वांट टू कन्वर्ज इट ऑन वन पॉइंट एंड बर्न दैट पॉइंट, राइट। वी वांट द मिरर टू ओनली रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द एंटायर कैविटी टू हीट अप द कैविटी, ताकि यूनिफॉर्मली हीट अप हो कैविटी, ओके। तो इसलिए इसमें प्लेन यूज होता है, राइट। लेकिन वो कई बार क्योंकि हीटिंग का पर्पस सुनकर ऐसा लगता है कि कॉनकेव होगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। ध्यान रखिए, सोलर कुकर में प्लेन ग्लास को यूज कर, प्लेन ग्लास या फिर प्लेन व्हाट डू यू से मिरर को यूज करते हैं, प्लेन मिरर। ओके, फॉर सर्वेलेंस के लिए जैसे कॉन्वेक्स को यूज करते हैं, राइट। If you don't want to invest into expensive CCTVs, you can install convex mirrors in your shop. Okay. Why do we use convex mirrors? Reason? Because we have Because we can have a wider view of the shop and we can Wider we- field of view.
Okay, that is the important part. The answer you have to give is wider field of view. Yeah, wider area covered. You can write it in your language. Field of view word use करें, शायद इतना जरूरी नहीं है, लेकिन the key word here is wider. वो आप कह देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे. Wider field of view इसमें आपको मिलता है. तो आप ये चाहते हो कि बहुत कम मिरर्स लगाकर you are able to check out your entire shop. Looking mirror. लुकिंग मिरर क्या होता है? जिस पे देख के हम अपने बाल बनाते हैं या Plane mirror. कौन सा यूज होगा इसमें? प्लेन. Plane mirror. इसमें हम प्लेन क्यों यूज करते हैं? रादर देन लेट्स से कॉनकेव. हमने शेविंग में कॉनकेव बोला, लुकिंग में प्लेन बोला, ऐसा क्यों? Because here we want to see the same image, same size of object. हाँ, हम इसमें बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं चाहते अपनी इमेज में किसी भी तरह का, राइट? शेव करते वक्त वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सीइंग कि कुछ हेयर्स आर नॉट लेफ्ट हियर एंड देयर, राइट? तो द शेप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाइल getting ready for a party you want to see the exact face you have, right? And hence replica हमें exact चाहिए, we use the plane mirrors. Okay. Kaleidoscope में कौन से mirrors use होते हैं? Plane mirror. Again plane mirrors are used in kaleidoscope also. Periscope में Plane. again plane. Mirror. Everybody remembers what a periscope is, right? पेरिस्कोप होता है हिडन चीजों को देखने के लिए, राइट? कि यहाँ से लाइट आई, ऐसे बाहर आ गई, आपने देख ली. लाइक इन सबमरीन वी यूज पेरिस्कोप्स. पार्किंग असिस्टेंट्स में पार्किंग असिस्टेंट्स आर लाइक, you know where they are. In parking areas there are mirrors fixed so that you can see there is no car behind you, there is no car on the side, etc. So obviously they are like Convex mirror. so they will be convex. You want to cover a larger area, right? So with this we complete this slide. We will continue with more concepts of this chapter tomorrow. Okay, Thank you, sir. thank you, bye bye. Thank you, sir. Thank you, bye bye.